situation. So we go to the fourth component of emotional intelligence, which is social skills. So social skills is the ability to connect with the people. It is ability to motivate people to to create friendly and collaborative environment. Again, to make to understand social skills, I'm going to tell Yeah. one very beautiful and small story. It is a story about let's see what the story is about. uh, Yeah. this is again long, it's quite old story. So there was a small village wherein the people of the village were quite hardworking. And in the village, there was this factory, especially. There, people were really hardworking. So one day, what happens? There was this, one of the worker in the factory. वो अपने boss के पास जाता है and he tells him कि, sir, आज मैं जल्दी जाऊँ क्या? Because I have to go take my son to the exhibition, to the small exhibition which has come in the village. So boss says, yes, you can. It's been long. तुमने छुट्टी नहीं ली है. You can take, early leave. With very excitement and all. You know, he goes back to his desk and he winds up his work very fast. But by the time he winds up his work, he sees that it's 8 o'clock. Because he was so engrossed in work, he was so happy कि वो भूल ही गया that he has to take, to family to the village and this to exhibition and all. तो and then he feels really bad. Oh shit, मेरे बच्चे वेट कर रहे थे, मैं तो उनको लेके नहीं गया and all that. Lot of things were going in his brain कि बच्चे बोलेंगे कितना बुरा पापा है and all. And with a very disheartened state, he goes to his home and he sees that there's nobody in the house. And then he wonders कि oh shit, ये सब लोग कहाँ गए? And just thinks for 5 minutes because at that time वो phone वोन नहीं थे. He's just trying अपने nearby area में ढूंढने की कोशिश करता है and come back to his house and sees that kids are coming with balloons and lot of things. The wife also is coming with balloons Yeah. and they were really happy and all. So husband asked कि आप लोग exhibition पे कैसे गए थे? Then the wife answers that your boss had come and he told us कि you are quite busy and he was really excited to take you all, uh, you know, to the exhibition. But I think he Yeah. was really busy. So boss himself takes the kids and the family to the exhibition. And do you know whose story I'm talking about? I'm talking about the story of APG Abdul Kalam. This is the true Okay. story. This is the true story which had happened when he was there. Abdul Kalam had a gift, to connect with people. Abdul Kalam ke liye to his family was for the first time, interaction with his family would have been for the first time. But he had this gift, to how to connect with people, how to be with people, this is all about social skills. If you can Yeah. again summarize in very, small Yeah. layman Yeah. language. ओके। मैम ने बताया कि फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है जो इमोशनल इंटेलिजेंस में होता है, इट इज़ अबाउट सेल्फ स्किल्स, सोशल स्किल्स, मतलब किस तरीके से आप सोशली करते हैं। जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं और एज अ आप टीम मैनेजर हैं या आपके अंडर में लोग काम करते हैं, तो आपका जो पर्सनल काम है उसके अलावा भी आप उनकी पर्सनल लाइफ में अगर हेल्प कर सकते हैं, सोशली अगर उनको हेल्प कर सकते हैं, या आपका जो काम है उसमें उनको पर्टिकुलरली हेल्प कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम प्रोफेशनली कुछ लोगों को बताते हैं जो पब्लिकली बता देते हैं, तो वो चीज़ें हमें उनको पब्लिकली ना बता के पर्सनली इनको बताना चाहिए। मीटिंग्स में जनरली हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें सोशली मतलब उनको हेल्प करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका बढ़ेगा, आपकी टीम के साथ बॉन्डिंग बढ़ती है और आप सोशली कनेक्ट रहेंगे तो उनकी पर्सनल लाइफ रहेगी, तो लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहेगा। जो एक एट्रिशन का प्रॉब्लम आता है कंपनीज के अंदर, और मैं अपना खुद का भी एग्जांपल दे सकता हूँ कि आई हैव रिटेन्ड माय टीम फॉर द 7 years, मतलब 7 साल तक मैंने काम किया और एक भी छोड़ के नहीं गया। मतलब ये रिकॉर्ड माना जाता है कि इतने साल तक लोग आपके साथ कैसे टिके, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन द सोशल स्किल्स ऑल्सो। उनकी लाइफ में जो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं जो सोशली वो लोग फेस करते हैं ऑफिस के अलावा, उसके बारे में भी अगर आप बात करते हैं तो यू कैन बी अ गुड मैनेजर। और ये स्किल्स आपको एज ए एंटरप्रेन्योर हेल्प करेगी, आप खुद का भी अगर स्टार्टअप करते हैं। Okay, so now the thank you so much again. या। So the last component of emotional intelligence, which is motivation. Motivation is anything that motivates you to be in action.
That is motivation. So to summarize, again, I'm gonna tell one very small story. The story is about there was this girl who used to play, very nice this uh, sport called tennis. Yeah, yeah. Long back, it's again very old story. But on a one day, on her way back to her school, maybe, or maybe, maybe practice or something, she faces small accident wherein she loses her leg. And a person who plays sport and a person then who loses her leg is really difficult for that person to live in the life. So what happened? She was quite disheartened at that time. Ki, Abhi to I can't play any kind of sport and all. But something happened that made her live at that time. So she couldn't play sports, but she had this thing in her brain. ठीक है मैं sports तो नहीं खेल सकती, but I want to set some record for me and for everybody. So she climbed Mount Everest. Along with Mount Everest, she climbed few other tallest mountains we have it in the world. And this story is about Arunima Singh. It's Yeah. again a true story. When you find the reason to live, when you find why to live in the life, you will find anyhow how to achieve that thing. You know, something which motivates you. uh, the only thing which used to motivate her, yeah, भगवान ने मुझे जिंदा रखा है, there would be some reason because I am alive. I would have passed away, I would have died, but no, I'm Yeah. alive. There has to be some reason why, because I'm alive. She knew why at that time. So when you find why to live in the life, you will find anyhow how to achieve that. So that is motivation. Uh, Again, if you can summarize it in a small, या मोटिवेशन इज़ ऑल अबाउट कि आपका लाइफ में गोल क्या है, किस तरीके से आप पर्पस उस चीज़ को क्या देखते है. हैं ऐसा. या मैम ने जैसे एग्जांपल दिया कि शी हैज़ लॉस्ट द लेग, मतलब वो उन्होंने वो चीज़ की है कि जो लोग ऑलरेडी दे हैव द पैर, जो उनके पैर होते हैं, फिर भी वो लोग सोचते नहीं है कि वो हिमालय पे चढ़ें, लेकिन उन्होंने बिना पैर के एक कोशिश की. और सबसे बेस्ट पार्ट जो स्टोरी का बताया जाता है, रिवील किया जाता है कि वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि जब हिमालय पे हम चढ़ते हैं तो आपके जो पैर हैं वो -52 डिग्री से ज़्यादा फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन उनको जो पैर थे वो ऑलरेडी स्टील के थे. तो वो चीज़ उनको मतलब उसको पॉजिटिव वे में लिया उन्होंने. और वही जो एक नॉर्मल इंसान होता है उसको पैर गल जाते हैं तो वो वापस चले जाता है, वो कोशिश नहीं करता है दोबारा. लेकिन उन्होंने उस चीज़ को पॉजिटिव लिया, उस चीज़ का सपोर्ट लेके उन्होंने अचीव किया. और एक तरीके से मतलब जो करके दिखाया, जो ऑलरेडी जिनके पैर हैं वो भी मतलब लौट के जाते हैं वहाँ से. तो शी हैज़ गिव अ वेरी गुड एग्जाम्पल, सेट एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू द वर्ल्ड. So that was the last element of emotional intelligence. So I'm gonna tell few tips how to improve your emotional intelligence. So the first important point is listen. So if you want to understand what other people are feeling, the first step is to pay attention. Take Yeah. time to listen what people are trying to tell you, both verbally and non-verbally. Body language can carry a great deal of meaning. The second important tip is empathize. Picking up on emotion is critical, but you also need to be able to put yourself into somebody else's shoe in order to understand their point of view. Yeah. So third tip is reflect. So the reflect is the ability to reasons with emotion is an important part of emotional intelligence. Consider how your own emotions influence your decision and behaviors. जब तुम गुस्सा होते हो, you react, you act. Yeah. This is how my emotions are influencing with my decisions and my behaviors. When you're thinking about how other people respond, assess that their emotion plays at that time. Like, अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे पार्टनर से he is upset, but being upset also he should act and react the way you want. But at that time you need to understand like how you are hurt, he is also hurt. He will Yeah. not act and react based on how you want because he is also disturbed at that time. So he will Yeah. take his own time to come back to normal state. Likewise, how a person will take his own time to come back to normal state. So this is small thing about emotional intelligence Oh, in a yeah, very yeah. fast way.
Yeah, we have one to two offline questions and one online question also. Can we take the questions? Yes, yes, please. ओके, वी हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम आवर फेसबुक ऑडियंस। उन्होंने पूछा है कि एक जैसे हाई, जो आपने बताया इमोशनल इंटेलिजेंस दो तरह के होते हैं, एक हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, एक लो होता है। तो हाँ जी। किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय या इंडिविजुअल के अंदर अगर लो इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर वो उनको पता करना है कि ये लो है इमोशनल इंटेलिजेंस, तो क्या कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं कि उनको पता चल सके कि ही इज लो इन ई आई, एज यू हम हैव लोग के टोल्ड? पास बहुत सारी टेस्ट्स हैं कॉल्ड साइकोमेट्रिक्स टेस्ट। ओके। बहुत सारे MBTI टेस्ट टू सी व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर इनटू। साइकोमेट्री टेस्ट है, और ऐसी साइकोमेट्री के साथ तीन चार बहुत सारी टेस्ट्स आती है, वेर इन यू जस्ट डू द टेस्ट, क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, यू जस्ट चूज द ऑप्शन बट बी ऑनेस्ट विद द टेस्ट, and then ओके। जो आंसर आता है that answer will tell you how emotionally intelligent you are on an average level or on a mid level or on a high level. Those tests will help you. या या। You can just type on ओके। Google and psychometry test to know how emotionally intelligent you are. There will be a lot of list coming on Google, and one can do the test, one can take the test, and the answers will come on the spot. Okay, we have one live question from the audience. Mayank is asking that how can we take the organization pressure, the pressure in the organization, the hierarchy pressure is there. So how an individual in the basic level he is doing the job. So how can he handle the pressure the organization is putting on him? और सी प्रेशर तो हर किसी को होता है, प्रेशर घर पे Yeah. भी होता है, प्रेशर ऑफिस में भी होता है, प्रेशर हर जगह होता है। एक प्रेशर एक बच्चे को भी होता है अपने लेवल पे, एग्जाम का प्रेशर, स्कूल जाने का प्रेशर, और ट्यूशन जाने का प्रेशर। बट हाउ टू हैंडल योर प्रेशर इज ऑल अबाउट यू। व्हेन यू नो अच्छा शिट ये प्रेशर, अब ये स्ट्रेस आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म, just leave that thing, do whatever you like. So with me, if I'm stressed, I just go and do a running helps me to alleviate my stress. So with you, just analyze कि किससे आपको खुशी होती है। म्यूजिक Yeah. सुनने से खुशी होती है, ओके बॉस इज स्क्रीमिंग एट यू, अब 5-10 मिनट के लिए म्यूजिक सुन लिया ऑफिस में बैठ के, एंड यू शुड कम बैक टू नॉर्मल, बिकॉज अल्टीमेटली आप ऑफिस में एंड यू हैव टू वर्क। Okay, somebody else, you have a lot of expectations, boss has a lot of expectations from you and not able to come up to the expectations. Write a list कि मैं कहाँ गलत हूँ और मैं कैसे अपने आप को improve कर सकता हूँ, and once you know how you can improve yourself, you will know the cost of the stress, कि इस वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, let me work on the cost of stress, and ultimately you will handle your stress. या इसमें भी दो सिचुएशन होती हैं कि फर्स्ट पार्ट तो मैम ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकंड पार्ट ये भी हो सकती है, उन्होंने अपना प्रॉब्लम तो एक्सप्लेन किया कि प्रेशर आ रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि प्रेशर क्यों आ रहा है, उस कंडीशन पे भी ध्यान देते हैं। हो सकता है परफॉर्मेंस उतना अप टू डेट ना हो, ये चीज़ें भी उनको देखनी पड़ेंगी कि उन जो कंपनी की डिमांड है, कंपनी जो चाहती है वो चीज़ें अगर वो टाइमली कर रहे हैं तो उस पर वो बात कर सकते हैं। अगर वो उसमें लैग कर रहे हैं तो उनको उस पर वर्क करना पड़ेगा। या आपने बताया एक्सपेक्टेशन ज़्यादा उनका हो सकता है कि कंपनी तो ज़्यादा हो लेकिन इतना कंपनी मीट नहीं कर रही, तो उस हिसाब से वो अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं कि अभी क्या राइट टाइम के लिए से अभी फॉर द पेंडेमिक टाइम थिंग्स आर नॉट गेटिंग, जो पैसे पहले जो इंसेंटिव होते थे उतना ज़्यादा इंसेंटिव नहीं दे पा रहे कंपनीज, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इट इज़ अ टाइम डेट हमको निकालना है। अगर आप सब चाहते हैं कि आपका नॉलेज इसी तरह से बढ़ते रहे तो आप हमारे चैनल नॉलेज बड्डी को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सके।